Hi, this is Odisha Education and Development Center. Today we will learn Microsoft Word and Layout tab. So there are different tabs in Microsoft Word: Home, Insert, Draw, Design and Layout. So we are going to learn Layout tab. I mean Layout tab पढ़िया Microsoft Word रो. Layout tab रो first option margins, orientation, size, column and these are the different options available with the layout tab. ए सब layout tab रा option उड़ाक अच्छी. देखिए गोटे गोटे option. So by mouse over it describes the different options. So adjust margins option. Adjust margins. Set the margin sizes for the entire document or the current selection. Choose from several commonly used margin formats or customize your own. आमे एठो मार्जिन सिलेक्शन कर परिबा अदरवाइज आमे कस्टमाइज भी कर परिबा मार्जिन. सो क्लिक ऑन द मार्जिन्स ऑप्शन. मार्जिन माने लेफ्ट आउ टॉप मार्जिन, राइट एंड बॉटम मार्जिन. सो लेफ्ट मार्जिन ए पोर्शन दा लेफ्ट मार्जिन बोली कहउचने, आउ टॉप मार्जिन ए पोर्शन दा टॉप मार्जिन कहउचने. हमर एठी अछि ए जो ब्लैक कलर रो डार्क कलर रो सीमेंट कलर रो जति देखौची स्केल रो सेति होची मार्जिन एरिया. क्लिक कले तार ड्रैग करिया गोटे डॉटेड लाइन देखौची देखि परिया हमें. सो डॉटेड लाइन डा होची मार्जिन एरिया. टॉप रो डॉक्यूमेंट रो बॉर्डर रो डॉटेड लाइन पर्यंत होची मार्जिन एरिया. सेथि सेठी हमर हेडर एंड फुटर रहउची टॉप एंड बॉटम मार्जिन रे. आ लेफ्ट मार्जिन एटा हमर लेफ्ट मार्जिन आउ एटा हमर राइट मार्जिन. हम एठी ड्रैग करिकि निजे भी मार्जिन सेट कर परिया. फॉर एग्जांपल मो एठी किछ लिखिया में चाहूची इक्वल टू रैंड 5,4. सो से मार्जिन एरिया आमे जति सेट कले से मार्जिन एरिया भीतर ही टेक्स्ट कंटेंट हमर जहा कंटेंट आसीबो. टॉप मार्जिन भी सेमने हमें सेट कर परिया. सो आज वो यू विश हमर कस्टम मार्जिन हमें सेट कर परिया. अदरवाइज से मार्जिन एरिया रे हमें डबल क्लिक कले भी पेज सेटअप रे हमर टॉप बॉटम मार्जिन पई हमको फैसिलिटी से प्रोवाइड करिवो. फॉर एग्जांपल टॉप मार्जिन हमें 1 दबा, बॉटम मार्जिन 1 दबा, लेफ्ट मार्जिन 1.25 दबा, राइट मार्जिन 1.25 दबा. गटर मार्जिन कौन ना स्पाइराल बाइंडिंग पाई बोली. स्पाइराल बाइंडिंग पाई बोली लेफ्ट हैंड साइड रे हमर गोटे एरिया छड़ा हेता होची दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन. गटर मार्जिन देखो बढ़ेले गटर मार्जिन बढ़ेले स्पाइराल बाइंडिंग पाई बोली मार्जिन सेपरेट मार्जिन से छाड़ुची. गटर पोजीशन कैन बी लेफ्ट और टॉप. आम जदि लैंडस्केप पोजीशन रे रखिया ताहले टॉप रे रखिया गटर मार्जिन दा आमे ऊपर आडू डॉक्यूमेंट को रीड करिया, नले लेफ्ट रे रखिले लेफ्ट रो डॉक्यूमेंट को आमे रीड करिया. आमे बाइंडिंग को पोजीशन रे करिया ताको डिपेंड करछि गटर मार्जिन. आ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डॉक्यूमेंट रो साइज नै ओरिएंटेशन हला ना. सो डॉक्यूमेंट रो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट माने स्ट्रेट आसीबो लंबा रे, आउ लैंडस्केप माने चौड़ा आसीबो. इट विल कम इन विड्थ wider and it will called taller. So portrait page will called taller page and landscape are called as wider pages. So click OK in order to set the margin. And another, by clicking over the margin we can get the different default margins like Office 2003 default margin set हो document रो आम एटा ड्रैग करिक लेफ्ट मार्जिन बढ़े देचे. सो आम एठी नॉर्मल मार्जिन दे देले नॉर्मल मार्जिन आसला. वाइडर हाँ गटर मार्जिन आम सेट कर देचे. गटर मार्जिन आम रिमूव कले से सेती मार्जिन रिमूव करियो 0 गटर टू बी 0 गटर मार्जिन 0 कर दबा. ओके सो सेती मार्जिन से रिमूव कर दबा. देन नॉर्मल मार्जिन 1.1 पॉइंट, लेफ्ट मार्जिन 1, राइट टॉप मार्जिन 1, राइट मार्जिन 1. देन नैरो मार्जिन अब ये कम करिया मार्जिन कम करिया पे थिले नैरो मार्जिन आ मॉडरेट मार्जिन. सो बेटर आमे यूज करिया Office 2003 default margin. This is the normal margin. Then orientation page can be portrait or landscape. Just previously we have discussed portrait is the taller pages and landscape are the wider pages. So we can see wider pages. These are the wider pages we can see, and taller pages. These are the taller pages we can see. See the page is in taller way. And orientation if you will change to landscape it will called wider pages. Then what are the page size? So normal we will work over the portrait orientation. Normal let us
and documents are in portrait format. Then size comes A4, then double of A4 is A3, a little bigger size, and more paper sizes are there. Legal paper size, bond papers are called legal letter size. Legal size or letter size are called bond papers. Then A4 is the Xerox papers. We will always work with the A4 size or Xerox paper size. More paper sizes are also there. A4, A3, A5, A6 are also available. So we can use A4 among them. Then columns. Columns, how many number of columns we want in our document? Let it to be 3 columns. Though there is not sufficient content to complete 3 columns. So now it has sufficient content to have 3 columns. These are the column margins. We can set the column margin by dragging from the column margin area. Okay. So we can have 2 columns. So it will select as 2 columns. So let's have left small column and right bigger column, big one. So let me write the first line as Odisha Education and Development Center, and it should be in a single column. So column to be 1. Next, further after this line, after the first line, we will divide the column into separate columns. So into 2 columns or 3 columns, or we may set as 4, 5, any column number, so we can provide, but let it to be 3 columns. Then it is asking apply to whole document or this point forward. I want this point forward to have 3 columns. So this point forward. Okay. So now the second line onwards 3 columns are there, and the first line is the single column. Let's see how it is appearing in single column. Yes, it's in single column. We have seen in different newspapers and magazines that the one line is in a single column and others are in multiple columns. So let me choose after this point the column should be break to next column. So for the column break I can use Control Shift Enter. So the column has breaked into next line. There is no column in the first line, first column. Okay. So after this line I want the column to be separate to next page, next column. So this is called column break. Control Shift Enter, column break. We can have separate columns. And after this point I want to have a single column. So put the cursor at this point, then choose columns, more columns, 1 column, and this point forward. You should remember to choose this point forward in order to have the features for further content. Click OK. OK करदेले सेठी 3टा कलम अछि तापर सबु 1 कलम हेगला आ कलम रे डिवाइड हेनी. So this is how different columns we can work. We can work over different columns. And this is break. There are column break or page break. I want to this to be appear on the next page. I want to break this page at this point. So put the cursor over there and press Ctrl Enter. So the page is break down at that position. There is no content after this point. At the next page it will have the content. तापर next page रे content आसो. से page रे आउ किछि content रहबेन. हाँ further हमें जदि एठी किछि type करिवा that will appear in the same page. That will appear in the same page. But page break was there. सेठी हमर page break हे गला तापर next page को सीधा पळे आसो. आमे सेठी enter दे दे आस्तिले कोन हेतांदा ना गोटे गोटे लाइन सेठी रहि जाइथांदा.
एटी गोटे गोटे लाइन रही जाउची कर्सर जाउची माने गोटे गोटे लाइन अच्छी सो इट विल हैव बेटर प्रैक्टिस ऑफ पेज ब्रेक कम्स indentation paragraph and indentation spacing and indentation. So let me remove all this content so that we can have different practice. For example, I have written 5 paragraphs with 8 sentences. So each paragraph having 8 sentences. So this is first paragraph, this is second paragraph. We are looking into first paragraph, so cursor is at first paragraph. Left indentation, we can provide the left indentation, so it will increase the left indent. The shortcut key is for left indentation is Control M. So just put the cursor over the paragraph and press Control M. It will have a left indentation. And how to remove the left indentation? Just remove the left indentation or Control Shift M. Press Control Shift M in order to remove the left indentation. In the same way, right indentation is there, then remove the right indentation. Then comes Control T for hanging indentation. Control T for hanging indentation. So first line will be as it is, and further in the same paragraph other line will be have left indentation, that is hanging indentation. How to remove the hanging indentation? Control Shift T. Control 0 have a line break from the previous line, one line space before the paragraph, one line space before the paragraph. Control 0, again Control 0, it will remove the before paragraph. Just see, this is 0 point before line and I am pressing Control 0. Control 0 mu press kale 12 points it is increasing at the before the paragraph. And Control 1, one line gap between the lines of the paragraph. Control 2, 2 lines gap between the lines of the paragraph. एटा हमर जतले पोएम की पोएट्री हम लिखुचे, पोएम लिखुचे सेतबेले हमर एटा दरकार पड़िबो. सो 2 line gap between the lines of the paragraph. Control 5, 1.5 line spacing between the paragraph. So Control 5 is better for document writing or for the letter body. Let it be Control 1, one line between the lines of the paragraph. So Control Q is reset the paragraph. Control Q is used for reset the paragraph. Thanking you.